by the time I became 14, I was already a married person. And by time I became 18, I was a proud father. And then I met a saint, a godly person. And he told me, इसलिए हमको बहुत पहले से साधु संतों में विश्वास रहता है. उसने कहा कि you try for UPSC, you will become an IPS officer. Bihar has been a state of violence also, land of massacre also, because 20 years, 30 years back, 20, 25 years back, I have seen not less than, 100 massacres in my career, big, small. I have seen Bathe where more than 60, 70 persons were butchered or killed. I have seen killed actually, not butchered, but I have seen Senari where more than 40 persons, innocent persons were butchered. या प्रेम होगा, इश्क मोहब्बत होगा तो शादी करने के लिए करेगा, या फिर उसको रेप करने के लिए करेगा, किसी भी कारण से लेकर के जाएगा इसमें से, तो उसको बाहर मार करके उसके दरवाजे के पास ले आकर क्यों छोड़ेगा? जहां मारेगा वहीं फेंक देगा, गाड़ देगा. तो ये तो मूर्ख भी अपने कॉमन सेंस से समझ सकता है कि नवरूणा की लाश जहां मिली वहीं उसकी हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, जो भी हुआ. Hello everyone, this is Pallavi and you are watching Indian Masterminds. We have a special guest today who served as the DGP of Bihar, tried his hands in politics and has finally chosen spirituality over everything else to find peace in God. The saffron robe wearing sannyasi has become a globe-trotting preacher, spreading the message of God and peace across the world. Please welcome Mr. Gupteshwar Pandey. So, sir, your journey started from a small village in Buxar, Bihar, and then you went on to become the DGP of the state. You had a really long tenure. We can see you have seen it all. So when you look back now, how do you see your journey? Palvi, I must have spoken on 100 platforms that are available on social media also, that how my childhood started. It was full of struggle. I was born in a small village, in a remote village of Bihar, and where there was no electricity, no road, no hospital, no school, no facility was there. And my background, I've told several times that I come from a very humble background, and nobody was educated in my family, Pallavi. My father was not educated, my mother was not educated, my grandfather, my grandmother. In fact, nobody in my family before me had gone to school for formal education. I was perhaps the first who went to school for formal education. That is how I started. Sorry to interrupt, but not like for class 1, 2 also. कि किसी ने कोई स्कूल like nursery जैसे होता है 1, 2 भी गए. उस समय there was no concept of nursery and play school. Yeah, Concept was not there. This is very old story. This is 60 years, 55 years old story. Yes. Now I am turning 62. 62, in fact, I have already completed. Okay. So this is very 55 years back, especially in villages, we didn't know about all these things, play school and nursery school and all these things. In village school, in government school, in a standard 1, I got my admission when I had already completed perhaps 8 years of age. Oh. Then I was admitted in class 1. And by the time I became 14, I was already a married person. And by time I became 18, I was a proud father. So you can imagine, my whole study started after my marriage. When I got married, at that time I was studying standards 8th. I was in standard 8th. Then 9th, 10th, 11th, 12th, whole college education, university education. So it was full of struggle, there's no doubt about it. My father was a saintly person, he had nothing to do with, family affairs. My grandfather was the real housemaster, and he used to look after all of us. Right. He became very pretty old. Then
I became the master of the family, owner of the family. I was the only one at the age of 14, 15 after my marriage. I had to look after two my younger brothers, three my unmarried sisters, and my family, my wife, my mother, and my father as well. So it was full of a struggle, there's no doubt about it. But somehow I completed my matriculation. Then I got admitted in Patna College. I did my intermediate from Patna College. Then graduation also from Patna College only in Sanskrit. Sanskrit was my subject. And I completed my graduation in 81. So I used to, teach students. And what I would get is very surprising. I'll get only 5 rupees for 1 hour teaching, tuition, 5 rupees only. So 2-3 hours every day, I will teach. I'll get 10-15 rupees per day. And that was the only source of income. And this is how I supported my studies. Okay. So, like you already told that after you were just 14 when you were married, or puri family Yes. जिम्मेदारी आपके ऊपर थी. You didn't have any stable job or career, and you said you were you were tutoring and getting only 15. So how did things move on after that? क्योंकि इतनी सारी देखो घर में पैतृक जमीन थी और रहट तो won't understand what is रहट. Very traditional kind of instrument, पानी सिंचाई करने के लिए, जिसमें बैलों को जोत करके कुएं से पानी निकालते हैं. तो वैसे 2-4 बीघे खेती हो जाती थी, तो साल भर खाने के लिए चावल हो जाता था, गेहूं हो जाता था, और 2 साड़ी में माँ का साल भर काम चल जाता था, 2 धोती में पिताजी का काम चल जाता था, 1 कुर्ता पैजामा में मेरा साल भर का काम चल जाता था. खर्च बहुत कम था, तो somehow it was very tough. It was really very tough life. There is no doubt about it. But time was different and इतनी महंगाई नहीं थी, तो किसी तरह से somehow we survived. Yeah, so when did this happen? Like, when did you think this tuition and this teaching thing is not working and I need to do something big, and you appeared for UPSC? So what was that point when you decided, let's try for... After matriculation, somehow motivated by one of my friend, I went to Patna, took my admission. And after taking my admission in Patna, 100 रुपये खर्चा था हर महीने का. That 100 rupees, 62 rupees was the mess fee for fooding, dinner and lunch for 1 full month, only 62 rupees. And 8, 9, 10, 9 rupees perhaps was the hostel fee per month, and 8 rupees 75 paise per month, this was tuition fee, school, college fee. So all clubbed together, less than 100 rupees. ये पैसा भी घर से नहीं मिलता था, ये ट्यूशन करके ही अरेंज करना होता था. तो वहां जाने के बाद, लोगों के संपर्क में आने के बाद, मेरे मन में संकल्प उठा, बिकॉज हमने स्ट्रगल देखा था, कि आई हैव टू डू समथिंग बिग. एंड देन आई मेट अ सेंट, a godly person, and he told me, इसीलिए हमको बहुत पहले से साधु संतों में विश्वास रहता है. उसने कहा कि you try for UPSC, you will become an IPS officer. This is very funny thing. मतलब nobody would believe it. People won't believe it. And normally I don't share this with anybody. So if I remember correctly, I have never shared this with anybody on any platform. But I'll tell you, I met a godly person, a very holy saint, and he told me, look, if you try for UPSC, you will become an IPS officer. Why don't you try? That was something beyond my imagination. My academic background was not very good. My financial background was not very good. I didn't know actually what is IPS and what is IS. I came from a very, conservative and very humble background. So I could never think of becoming an IPS officer or IS officer. But that saint motivated actually. He told, you just complete your graduation, sit in the examination, you will become, this is my blessing. And I truly believed this. I did my graduation and tried by UPSC.
And I was selected for Indian Revenue Service. I joined also. And then again he met. After joining Indian Revenue Service, I was never interested in, trying for UPSC again. But the same saint met me again. He told, "Are you satisfied?" I am very much satisfied. I am class 1 officer and IRS, Indian Revenue Service, is very good. He told, "No, no, 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 no. Do you remember? Have you forgotten? I told you you have to become an IPS officer. Why don't you try again?" So then I tried again and I really became an IPS officer. This is very interesting. और उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि साधु संत सारे बेकार नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ दैविक शक्ति भी होती है. और I did it. I made it. तो IPS चूंकि उन्होंने, because he already told you he will become an IPS officer, तो after IPS you didn't try कि let's try again and I had 5 chances. उस समय कोठारी कमीशन आया था, you might not be knowing. तो उसमें क्या है कि 20 उसमें 2 years से एज बढ़ा दिया था. मतलब 26 तक ही दे सकते थे आप यूपीएससी. उसमें 28 तक कर दिया था कि यू कैन ट्राई फॉर सिविल सर्विस एग्जाम. तो आई हैड 5 chances. तो आई डिडंट ट्राई. वंस आई बिकेम आईपीएस ऑफिसर, साधु ने कहा था तुमको आईपीएस ही बनना है. तो अब इतनी बात का असर हो गया मेरे दिल पर कि अब मैं दूं भी तो आईएएस मेरा होगा नहीं. तो आई फुली सेटिस्फाइड. आई नेवर ट्राइड फॉर दैट. And so in a way you reached to the top of like IPS का सबसे top position is DGP and you became that. So I think it was meant to be, you becoming an IPS officer and then becoming a DGP. So right, again very interesting thing कि after 10 years back when I completed 22 years of service, I was IG then. I had resigned. I had taken voluntary retirement. And the same saint met me again. He is still alive. I am in touch with him. So he met me again. I told, why did you resign? I told because I am not feeling like continuing in the job. I want to join politics. He only told you have to become DGP, you join back. How can I join back? It is impossible. It has been already more than 10 months when I resigned. Now there is no provision. I can't get back to job. He told it will happen. And surprisingly, this happened. After 10 months, Bihar government took me into job. I joined IPS again and I became DGP. Yes, sir. I also remember that, all the news regarding this. So, sir, coming to bureaucracy, like itne saal you gave yourself in policing and all. So, what was the best thing about being in police and being part of bureaucracy, or what was the learning? There are so many negative things which I am not going to discuss. It is not the right platform. And actually, we are not here to discuss anything negative. Yeah. The good thing is about police is कि हमने life में for the first time I realized कि if you are honest and sincere and if you really want to do something good to the society, as a police officer, you can become an instrument of social change also. You can become an instrument of social change. You can help people many ways, more than the judiciary does actually, because you can deliver instant justice in many cases, which I have already, done in several hundred occasions. So I have been doing this. So community policing को हमने शुरू किया. Community policing तो आजकल बहुत ज्यादा popular subject है. लेकिन बिहार में community policing आज से 30 साल पहले हमने शुरू किया. और लोगों से जुड़े रहना. I had no time, no visiting hours. Anybody could see me anytime, 24 hours, at my residence, in my office, wherever I am. Anybody could go and see me. तो ये मैंने देखा, गरीबों का दर्द सुनने में, उनका दुख बांटने में आपको बहुत अवसर है. इंस्टेंट जस्टिस आप कर सकते हैं, उनका दुख बांट सकते हैं, and that gives you immense pleasure, lot of satisfaction, inner satisfaction, और उसको हमने बहुत एंजॉय किया लाइफ. Right.
एंड सर जस्ट नाउ वी सेड कि हम नेगेटिव चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपके करियर में कई सारी चीजें आपने देखी, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बेगूसराय टू जहानाबाद टू ईच डिस्ट्रिक्ट, काफी बुरी चीजें भी देखी, बट आई वांट यू टू आस्क द थिंग दैट यू हैवंट बीन एबल टू फॉरगेट, दैट गुड थिंग, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो यू स्टिल रिमेम्बर कि दिस हैपेंड टू यू एंड यू फेल्ट लाइक कि फाइनली मतलब दिस वाज फुलफिलिंग, and this is the देखो देखो अच्छी बातें बहुत हैं, because you know in Bihar long back Bihar has been I'm very sorry to say, but Bihar has been a state of violence also, land of massacre also, because 20 years 30 years back, 20-25 years back, I have seen lot, not less than 100 massacres in my career, big small. I have seen Bathe where more than 60-70 persons were butchered or killed. I have seen killed actually, not butchered, but I have seen Senari where more than 40 persons, innocent persons were butchered, and in Bathe more than 60 innocent persons were killed, and many Bathe, Senari, Miachak, many more. It's not possible to remember all those name of all those places and incidents, but not less than 100 massacres. तो ये तो एक बहुत डार्क पार्ट रहा. उसी तरह से बिहार, दो by and large Bihar has been peaceful from communal point of view, but communal tension बहुत वहां होते हैं, और past history में 30 years back बड़े बड़े भीषण कम्युनल राइट्स हुए हैं. से फॉर एग्जाम्पल इन नालंदा, इन भागलपुर, इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इन सासाराम, where several hundred people, innocent people from both communities have been killed by each other. So it has been a place of communal violence also. तो हमारे को अच्छा ये लगा कि 30-35 साल जितने दिन में सेवा में रहा, बिहार में जहां भी कम्युनल टेंशन होता था, वायलेंस होती थी, या वायलेंस होने की, राइट्स होने के चांसेस होते थे, और पूरा सिस्टम जहां फेल कर जाता था, वहां सरकार मुझे ही भेजती थी, irrespective of the fact that I have been posted at that place as DIG, IG or not. तो कहीं भी ऑल ओवर द स्टेट हमको सरकार भेजती थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जिंदगी में मैंने कभी लाठी नहीं चलवाई, मैंने कभी गोली नहीं चलवाई, और आज तक सैकड़ों बार ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे जाना पड़ा, कास्ट राइट वाले जगह पर, कम्युनल राइट वाले जगह पर, न लाठी चलवाई न गोली चलवाई, लेकिन एक बार भी असफल होकर के नहीं आया. ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया और फेल कर गया, मैं गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. और इसमें मेरी कोई मतलब अपनी बड़ाई नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ मी, हम में कोई ऐसा कुछ नहीं है, only because of people's trust, their love and their affection towards me. जहां भी गया एक बार हाथ जोड़ कर बोल दिया, भाई शांत हो जाओ, हिंदू हो तो मुस्लिम हो तो, सबने मेरी बात मान ली. तो ये बात मुझे बहुत आनंद देती है. मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी का मुझ पर बहुत विश्वास था, आज भी है. तो ये चीज हमको बहुत सेटिस्फेक्शन देती है कि मैंने हजारों लोगों को मरने से बचाया है. राइट. तो सर विल मूव ऑन टू योर स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो, लेकिन उससे पहले दो चीजें आई वुड लाइक टू आस्क. एक तो थोड़ा मेरे लिए पर्सनल भी है, बिकॉज नवरूना कांड हैपेंड इन मुजफ्फरपुर and I am also from Muzaffarpur, and that time matlab that was a hot topic among us, or I'm sharing it with you. I think Navruna के शायद भाई कजन वजन मेरे स्कूल में भी पढ़ते थे, so that topic was a very मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता था among student also. I was in like I don't remember exactly but 7-8 class, and still now I don't know, a decade has passed और still कोई conclusion नहीं निकला है about that case. नवरूना देखो हम बताते हैं बाबू आपको, आप मुजफ्फरपुर के हैं तो आप मुजफ्फरपुर में 7 साल रहा हूँ. I have spent almost 6 to 7 years as DIG, as IG, as additional DG. उस समय भी you were in Muzaffarpur only when this happened.
this I case. was I was additional DG over there. Right. So So I don't हाँ, want to go into the integrity, मतलब कि क्या हुआ exactly. I just want your opinion कि अभी तक उस केस का कोई conclusion नहीं निकला है. मैं On चलो that, देखो ना, what do you think? उसको सुन लो। हाँ, इसलिए कंक्लूजन नहीं निकला कि उस कंक्लूजन को निकलने नहीं दिया गया। okay. केस को शुरू से ही कुछ निहित स्वार्थ के लोगों ने, जिनको मुझसे नुकसान हुआ था, अब ये स्टोरी तो बहुत पुरानी हो गई, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, Right. गलत उसको एंगल दे दिया। और देखो, नवरूणा का अपहरण होता है और 3 महीने के बाद नवरूणा की लाश कहाँ मिलती है? उसके घर में, घर के आगे, मेन दरवाजा के 1 फीट आगे, 2 फीट आगे, घर के सामने नाला के अंदर सड़ी स्थिति में। Right. Yes. अब बताओ, अगर लड़की का अपहरण होगा और लड़की को कोई अपहरण करके घर से ले जाएगा, तो ले जा करके उसका मर्डर करके और फिर ले आकर के उस शहर के बीच में, बहुत संकीर्ण गली में उनका घर है, उस लाश को ले आकर उनके गली में, उनके नली में कौन रखेगा? स्पष्ट है, जो हुआ नवरूणा के साथ उनके घर में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर कहीं ले जाकर के उसका किडनैपिंग करके किसी ने मर्डर नहीं किया। तो बाहर ले जाएगा, वो उसको रेप करेगा, मर्डर करेगा, मार देगा, फेंक देगा कहीं भी, फिर उसकी लाश को उनके घर के पास क्यों लाएगा? उनके दरवाजे के नीचे और नाला में क्यों छुपाएगा, जो सड़ी हुई स्थिति में महीनों बाद मिलेगी? ये तो कॉमन सेंस से, कोई आदमी, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से कोई समझ सकता है कि किसी को अपहरण कर, लड़की का अपहरण क्यों करेगा कोई? या तो ब्रोथल हाउस में बेचने के लिए करेगा, या प्रेम होगा, इश्क मोहब्बत होगा तो शादी करने के लिए करेगा, या फिर उसको रेप करने के लिए करेगा। किसी भी कारण से लेकर के जाएगा इसमें से, तो उसको बाहर मार करके उसके दरवाजे के पास ले आकर क्यों छोड़ेगा? जहां मारेगा वहीं फेंक देगा, गाड़ देगा। फिर इतना रिस्क लेकर के लाश को शहर में कौन आएगा और ले आकर उसके दरवाजे पर फिर नाली में गाड़ेगा? तो ये तो मूर्ख भी अपने कॉमन सेंस से समझ सकता है कि नवरूणा की लाश जहां मिली वहीं उसकी हत्या हुई, या उसने आत्महत्या की, जो भी हुआ। लेकिन जो भी उसके साथ घटना हुई, चाहे हत्या हो, आत्महत्या हो, वो उसके अपने घर में हुई, कहीं बाहर नहीं हुई। लेकिन इसको लोगों ने गलत मोड़ दे दिया। एक लड़के को मैंने वहां जेल भेजा था, और जेल भेजा था, ये बात मैं बता रहा हूं को, वो लड़की के छेड़खानी के केस में पकड़ाया था, उसको जेल भेजा था। और उनके भाई चचेरे नवरूणा के बड़ी बहन नवरूपा के मित्र हैं। तो नवरूपा के मित्र तो हों, उनको जो छेड़खानी में पकड़ाए थे, उनको पुलिस ने वहां तख्ती पहना करके पूरे शहर में घुमा दिया था कि मैं लड़कियों को छेड़ता हूं, मैं गुंडा हूं, ये सब लिख करके। अब उनका अपमान तो हुआ, लेकिन उसको उन्होंने टारगेट बना दिया कि ये एडीजी साहब के चलते मेरा ये अपमान हुआ है, वही करवाए हैं, मुझे इनसे प्रतिशोध लेना है। अपने भाई को कहा। उनके भाई जो हैं वो नवरूणा की बड़ी बहन नवरूपा के मित्र थे, दिल्ली ही में। आप जानती हैं, आप मुजफ्फरपुर के हैं तो आप पता भी लगा सकती हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। तो अब नवरूपा से उन्होंने क्या बात की, नवरूपा ने अपने पिताजी को क्या बात की, सब मिलजुल करके ये उसके पिताजी को समझाया गया, चक्रवर्ती साहब को, कि आपके लड़की की लाश आपके घर में से मिली है तो आप जेल चले जाओगे, नहीं तो किसी बड़े आदमी का नाम लो इसमें। तो अब वो झूठ सच का, शहर के 10-12 लोगों का नाम, कुछ नेताओं का, कुछ क्रिमिनल्स का, कुछ पदाधिकारियों का, 10 आदमी का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दिया। यही 10 लोग हमारे लड़की को लेकर के मार दिए, मर्डर कर दिए। वो 10 में से किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं है, आपस में भी एक दूसरे के दुश्मन है। ये भी रहा कि 10 आपस में एक गुट के हों, आपस में मित्र हों, वो भी नहीं। कोई किसी गुट का है, कोई किसी गुट का है, एक दूसरे के शत्रु भी हैं आपस में, उस सबको देकर दे दिया। और उसी में कहा कि कहो कि सब हमारे को एडीजी साहब इनको संरक्षण देते थे।
और सुप्रीम कोर्ट ने पल्लवी इस केस का मॉनिटरिंग किया। सीबीआई ने 10 साल इसका इन्वेस्टिगेशन किया, 10 years, 400 से ऊपर लोगों का इंट्रोगेशन किया, सारे पुलिस पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर के वहां स्थानीय लोगों से लेकर के 400 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ। एक एक स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया और हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जाकर के इन लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता था, बताना पड़ता था क्या क्या किए, किसको किसको इंट्रोगेट किए, क्या फैक्ट सामने आया। और 10 साल तक ऐसे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसका अनुसंधान चला और सीबीआई ने अनुसंधान में अंतिम फाइनल प्रपत्र समर्पित कर दिया कि जो भी आरोप लगाया है नरूना के पापा ने जिस जिस आदमी को, वो टोटली फॉल्स है, उसका कोई आधार नहीं है, इन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। ये तो हो गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई ने इसमें अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया। लेकिन ये केस अधूरा इस अर्थ में रह गया कि केस के कल्प्रिट की जान बच गई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सारी स्थितियों को कोई समझ ले तो ये स्पष्ट है नरूना की आत्महत्या हुई या नरूना की हत्या हुई, जो हुई उसमें घर में हुई, उसके माँ बाप, उसके चाचा और उसके चचेरे भाई, ये सबको पता है कि नरूना को क्या हुआ। लेकिन ये अब रहस्य ही रह गया। लेकिन जितने लोगों पर आरोप उन्होंने लगाया था सीबीआई ने उसको सब गलत पाया। ये है नरूना केस। सर एक और केस है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसपे आपका स्टैंड वाज वेरी फर्म कि that wasn't a suicide but it was मतलब a murder. Look, what has happened in that case, I'll tell you. Sushant was killed or committed suicide, whatever. I never told on any platform that it's a confirmed case of murder. I've never told this. You see, my all interviews are available on social media. I have never told this, that Sushant has been killed. And I've never told this. What happened, either he was killed or he committed suicide, whatever has happened. The fact is कि सुशांत is no more. तो वो उसका न्यूज बना, सुसाइड का न्यूज बना, लेकिन within 20-25 days सुशांत सिंह राजपूत was out of news, completely out of news. Initially for 2-3 weeks he was in news that he committed suicide in Mumbai and all over India, all fans and his favorite family members. Okay. But after 20-25 days, Sushant Singh Rajput was nowhere in news at all. Yes. After 25 days or 30 days, I don't remember exactly, when I met his father met me, and he narrated the story in detail, that he told me that he had doubts that it was not a case of suicide. Sushant had been killed. I had a very long discussion with him on this. हमने पूछा कैसे आपको लगता है, क्या लगता है, और लंबा उन्होंने हमको रीजन दिया. Because of these reasons, I feel he has not committed suicide. He has been killed. Then I, got a case registered in Bihar, in Patna. Or the case was not registered under murder, under 302. वो हाँ, ये मर्डर का केस नहीं हुआ कि मतलब जिनके बारे में उन्होंने बताया कि इन लोगों के साजिश के चलते he has been forced to commit suicide, तो इस टाइप का कोई केस हुआ. और जब केस हो गया तो जो केस करेगा उसको इन्वेस्टिगेशन करना है. It's a simple thing. Because the case was instituted in Patna by Bihar police, then Bihar police had to investigate. So I made a team of 4 officers. I sent the team to Mumbai for investigation. And when my team arrived over there, the local police, Mumbai police, didn't allow to investigate the case. So all 4 officers, there was no Mumbai police, no cooperation from Mumbai police. My officers wanted to
talk to the local officers, wanted to see the PO, wanted to collect the evidence. Mumbai police would not cooperate, would refuse to hand over papers related to this case, and they were helpless, clueless. They didn't know how to do, what to do. Then I sent one IPS officer for better liaising, for better coordination, that this IPS officer will go, he will meet the senior officers, Deputy Police Commissioner, Commissioner of Police, and request for cooperation, and so that the case is investigated properly. But forget about meeting him and appreciating my this step. He was काइंड ऑफ होम अरेस्ट जिसको बोलते हैं, उस तरह से उसको होम अरेस्ट कर लिया क्वारंटीन के नाम पर. उसको निकलने ही नहीं दिया. यू कांट मूव, यू कांट गो आउट, यू कांट इन्वेस्टिगेट, यू कांट कलेक्ट एविडेंस, यू कांट मीट एनी पुलिस ऑफिसर, एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई पुलिस held a press conference also that this case has been registered wrongly in Bihar. Bihar police don't have jurisdiction to register a case because incident is taken in Mumbai, and Bihar police have no right to investigate the case. ये वहां पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे ऑफिसर को, और उसके बाद में ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत केस हुआ है, गलत ढंग से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. तब मेरे आईपीएस अफसर को छोड़ा. देन माय आईपीएस अफसर रिलीज. तो मैंने अपनी टीम को वापस बुला लिया, आईपीएस अफसर को भी वापस बुला लिया. अब मामला सुप्रीम कोर्ट देखने लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर स्ट्रिक्चर किया कि ही हैज बीन रॉन्गली डिटेन्ड, यू रिलीज हिम. बट सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि बिहार के डीजीपी ने केस किया तो गलत किया, टीम भेजा तो गलत भेजा, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो गलत कर रहे थे, बल्कि इस केस को सीबीआई को दे दिया. तो सीबीआई हैज टेकन अप दिस केस and investigation is going on. I don't know the update, what is happening, what is the progress in the case, ये हमको नहीं मालूम. लेकिन एक केस जो हुआ, इसमें मुंबई पुलिस का कंडक्ट था, that was not professional, that was not very unethical actually. तो वो उसके चलते पूरे देश के लोगों के अंदर एक संदेह है कि मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है. इसीलिए मैंने भी कहा, भाई देखो, मुंबई पुलिस का जो एक्शन है वो हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनएथिकल. मतलब आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट द डीजीपी वुड नॉट टेक माय कॉल. I tried to contact the Home Commissioner, I tried to contact the Police Commissioner Mumbai, Parambir, who was 1 year junior to me. Parambir would not take my call. He will not respond to my SMS also. So I tried my best to communicate to Mumbai Police, but Mumbai Police would not respond. Then I talked to my Home Commissioner, Additional Home Commissioner, Bihar, that you please speak to your counterpart in Maharashtra. My Additional Home Commissioner also tried to contact his counterpart in Mumbai, but of no, you know, he couldn't contact. मतलब पूरी तरह से कम्युनिकेशन को महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दिया. देन हम टीवी पर आकर बोलने लगे कि भाई दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी रॉन्ग, देयर इज समथिंग यू नो फिशी इन दिस एंड सम फाउल प्ले आई कैन गेस. और उसके बाद पूरे देश में ये हंगामा मच गया. अब पूरे देश के मन में सवाल तो है कि सुशांत का हुआ क्या. The fact must come, the truth must come out. Yes, sir, it's still going, and we really want answer. We don't know कि we will get or not. खत्म कर रही हूँ हमारी बातचीत को. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया. मुझे लगता है काफी कुछ मिलेगा जो लोग हम सुनेंगे आपकी बातों को. सो रियली थैंक यू सो मच.